Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishthang Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakaramayam Darati Swaparantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapara Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitangscha. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivikasa Swami Niti Namine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschatya Deshatarine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Ti Namine. Shri Varshabhanavi Devi Dayataya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha. Madhuryojjvala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktira Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudhapa Siddhanta Dvanta Harine. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Thank you very much for having all of us from Atlanta. We're very happy to be here and see all the young men, young women involved in the project here. It's very lively and it's exciting to see something like this. आप सभी का धन्यवाद तो हमें यहाँ पर होस्ट करने के लिए। तो हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप सभी यंग पुरुष और स्त्रियों ने सबने हमें यहाँ पर आप एंगेज हैं अच्छे से इस प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका संग हमें यहाँ पर मिल रहा है। We're also very happy to have the fortune of attending this celebration for the Avirbhav Mahamahotsava of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, which we're observing tomorrow. हमारा और भी सौभाग्य है कि कल श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव उत्सव मनाने जाने वाले हैं। So Mahotsava, Maha Utsava, big festival, means celebration. And the best way to celebrate the appearance of a great Vaishnava is by glorifying him. महोत्सव मतलब बड़ा उत्सव। तो किसी भी वैष्णव का उनका आविर्भाव को मनाने का विशेष तरीका है उनका गुणगान करना। So it's very nice. We've heard that for this whole week there's been Srila Bhaktisiddhanta Katha for Bhagavatam class, and even while taking prasad in the morning we have some katha about Srila Bhaktisiddhanta. It's very nice. तो काफ़ी दिनों से पिछले कई दिनों से भागवतम क्लास के समय पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय पर कथा हो रही है। यहाँ मैं देख रहा था प्रसाद के समय भी भक्त उनके विषय में पाठ करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। And actually our whole life and all of the things that we speak and all of the things that we do should be in glorification of Bhaktisiddhanta. जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, वो सबका उद्देश्य है श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती का गुणगान होना चाहिए। So thank you very much for giving me the opportunity to speak something. I didn't prepare so much, but I'll speak as much as I know, as much as I've heard about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. तो आपका धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का गुणगान करने के लिए। तो मैंने इतना तो प्रिपरेशन नहीं है मेरा, लेकिन जो भी मैंने सुना है उसी को मैं बताने का प्रयास करूँगा। As you all may know, His Holiness Bhaktivedanta Swami Maharaj has published a 3-volume book entitled Sri Bhaktisiddhanta Vaibhava, where most of the information that we have as ISKCON devotees about Srila Bhaktisiddhanta is recorded there. तो आप में से कई भक्त जानते होंगे, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने श्री भक्ति सिद्धांत वैभव करके 3 ग्रंथों में 3 पुस्तकों में ग्रंथ लिखा है।
तो इस्कॉन के भक्तों के लिए अधिकतर जो जानकारी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय में तो उस ग्रंथ से प्राप्त होती है। So whatever I speak about now, whatever minuscule amount that I'm able to contribute, it's further elaborated in those books there. And even those books, Maharaj has said that so many more books could be written. तो जो कुछ भी मैं लेश मात्र कह पाऊंगा तो उन्हीं ग्रंथों में से बताऊंगा। और महाराज भी बताते हैं कि उन्होंने वो जो 3 ग्रंथ लिखे हैं तो वो भी बहुत कम है। उनके गुणगान में तो कितने कितने और ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। And that is the nature of transcendence, is that it is unlimited. So there is an unlimited opportunity for service. There's an unlimited opportunity for glorifying the spiritual master. तो आध्यात्मिकता का यही गुण है कि ये असीमित है। तो हमारे पास असीमित अवसर है इन आचार्यों का गुणगान करने के लिए, उनके विषय में कहने के लिए। So most of you probably already know this, but Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is the spiritual master of His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder Acharya of this ISKCON movement. तो आप में से अधिकांश भक्त जानते होंगे कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो कि ISKCON के संस्थापक आचार्य उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। And we have one book called The Science of Self-Realization. I think we also distribute it here, right? It's a very popular book in the United States. And in that book, there's a section called Choosing a Guru. And in one of the articles in this section is Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada's Vyas Puja offering in Bombay in the year 1936 or something. He was a young man at that time. And in that Vyasa Puja offering, Srila Prabhupada writes that the spiritual master is one, and he becomes manifest in an infinite number of forms. तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक में तो एक सेक्शन है जिसमें कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का व्यास पूजा जो उनका ऑफरिंग है तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो गुरु है आध्यात्मिक गुरु एक ही है। So in many ways, our service to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is identical with the service of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Swami Prabhupada. Identical. Serving our Srila Prabhupada is identical with serving. तो अगर हम प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं उनके गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की सेवा करने से। Nonetheless, the pastimes or the Leela of the different Shakti-avesh avatars of the Supreme Personality of Godhead in the form of the spiritual master are all variegated. There's so much variety in all of these pastimes. तो जो उनकी लीलाएं हैं मतलब उसमें वो अनंत विविधता है, उसमें अनेक विविधताएं होती हैं इनकी लीलाओं में। And also it is said that one should not be lazy in understanding the Guru Parampara which one belongs to. और ये भी कहा गया है कि गुरु परंपरा को समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। Therefore, it's very important that all devotees who are involved in this Krishna consciousness movement make some endeavor to understand the life and the teachings of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. तो ये महत्वपूर्ण है कि जितने भी सदस्य हैं ISKCON के उनको प्रयास करना चाहिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन और उनकी शिक्षाओं को के बारे में जानने का। So he appeared in this world. Tomorrow marks the 150th anniversary of his divine appearance in this world. तो कल के दिन उनका 150वां व्यास पूजा महोत्सव होगा। He appeared in Shri Kshetra Dham, Jagannath Puri Dham. उनका प्रकट हुआ था श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में। As the son of Kedarnath Dutt, or more commonly known as Bhaktivinoda Thakur. उनके पिता का नाम केदारनाथ दत्त और जो प्रचलित नाम है श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर। And there's a whole backstory about Srila Bhaktivinod's prayers to the Supreme Personality of Godhead to send him someone who can help him spread the cult of Lord Chaitanya. श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी से कि उनको एक ऐसी संतान भेजे जो कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार करने में सहायक हो। Similar to the prayers of Advaita Acharya for the advent of Lord Chaitanya, Srila Bhaktivinoda Thakur prays to the Supreme Lord that he's not capable of spreading this Sankirtan movement by himself. So please send your representative, one from your own
family, one of your own associates, in order to help assist in this way. तो जिस प्रकार अद्वैताचार्य ने प्रार्थनाएं की थी चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लिए, उसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने आप को असहाय अनुभव कर रहे थे। उनको लगा मैं अकेले सक्षम नहीं हूँ इस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की भगवान जगन्नाथ से कि वो अपने ही किन्हीं एक महान पार्षद को भेजें। So, appearing in the dream of Srila Bhaktivinoda Thakur, Lord Jagannath tells him that your desire is very nice. If you really wish to have one of my associates be born in your family, then you must pray to Bimala Devi, the form of Durga which is presiding in the Jagannath temple in Puri. तो स्वप्न में जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि आप वाकई अगर मेरे ही किन्हीं पार्षद को चाहते हो अपने पुत्र रूप में, तो आप विमला देवी उनको प्रार्थना करिए। So Srila Bhaktivinoda Thakur submits this prayer to Bimala Devi, and soon after his wife Bhagavati Devi gives birth to a baby boy. तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर विमला देवी को प्रार्थनाएं करते हैं और कुछ समय पश्चात उनकी धर्मपत्नी भगवती देवी एक पुत्र को जन्म देती है। From the very beginning, right after his birth, there were many auspicious signs. The first one being that his umbilical cord was wrapped around his body, just like a Brahman thread. तो जन्म से ही वो शुभ चिन्ह थे उनमें, जैसे एक था कि उनका जो umbilical cord जो नाड़ होती है, नाड़ी, तो ऐसे जिससे माँ और बच्चे बंधे होते हैं, तो ऐसे उनके शरीर पे थी जैसे एक जनेऊ होता है। And also astrologers, one very prominent astrologer said that he had never seen such a brilliant astrology chart, and this was going to be a great personality. तो वहाँ पर जो ज्योतिषी थे, तब उन्होंने उनका ज्योतिष चार्ट बनाया, तो उन्होंने कभी देखा नहीं था कि ऐसा इस प्रकार का उनका भविष्य था। So seeing this child being born as the mercy of Bimala Devi, they decided to name him Bimala Prasad. और क्योंकि वो जो पुत्र थे वो बिमला देवी की कृपा से प्राप्त हुए थे, तो इसलिए उनका नाम बिमला प्रसाद रखा गया। And we can also understand this name in a different light. Actually, all of the prasad, which is given by Jagannath Swami in Jagannath Temple in Puri, is first offered to Bimala Devi before it's distributed to the public. तो जगन्नाथ मंदिर में ये प्रथा है कि जगन्नाथ जी को का जितना भी प्रसाद है वो पहले बिमला देवी को अर्पण होता है और उसके बाद फिर पब्लिक में वितरण होता है। So similarly, we can understand that the prasad or the mercy of Jagannath, of Krishna, becomes available by the mercy of Bimala Prasad, and then being enhanced by Bimala Prasad, it is distributed to all the conditioned souls. तो जगन्नाथ जी की जो कृपा है, तो उसमें बिमला देवी की कृपा और जुड़ जाती है, तो फिर वो और महाप्रसाद बन जाता है। So in this way we can understand Bimala Prasad or Srila Saraswati Thakur as being as distributing the mercy of Krishna. तो बिमला प्रसाद मतलब जो भगवान कृष्ण की कृपा को वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं। So from a very young age, Srila Bhaktisiddhanta, who was known as Bimala Prasad, exhibited great scholarly skills and abilities. He was extremely intelligent. तो बचपन से ही जो बालक बिमला प्रसाद थे बहुत ही मेधावी थे, बहुत ही स्कॉलर थे। He became very advanced in mathematics and astronomy, astrology from a very young age, and he was respected in academic fields from a very young age. बहुत ही कम वर्ष की आयु में वो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में काफी दक्ष हो गए थे। And on top of having so many material academic qualifications, he was also very devotionally inclined. In fact, he memorized the entire Bhagavad Gita by the age of 7 and was able to explain each and every shloka. तो ये एकेडमिक योग्यताएं तो थी, उसके सिवाय भक्तिमय उनमें बहुत सारे आध्यात्मिक गुण थे। जैसे 7 साल की आयु में उन्होंने पूरी भगवद गीता कंठस्थ कर ली थी। By the age of 15, he was asked to give lectures at a university about Jyotish, which he very quickly, soon after, gave up because of differences with the headmaster of that university.
जब 15 वर्ष की आयु में उनको यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया जाता था ज्योतिष के विषय में कुछ बोलने के लिए, भाषण देने के लिए, लेकिन कुछ समय वो चला और फिर वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के हेड मास्टर थे तो उनसे कुछ क्लैशेस होने के बाद उन्होंने वो बंद कर दिया। And it was at this time that he actually received the name Sri Saraswati, Sri Siddhanta Saraswati. This title was given. तो इसी समय की बात है जब उनको ये श्री सिद्धांत सरस्वती ये उपाधि प्रदान की गई थी। Siddhanta meaning the perfect conclusion, and Saraswati meaning the representative of knowledge or good speech, like that. तो सिद्धांत मतलब सिद्धांत और सरस्वती जो कि ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। So from a very young age he was recognized in academic circles, but he was never fully satisfied with just being a academician like that. तो हालांकि वो स्कॉलर थे लेकिन वो खाली एक एकेडमिशियन ऐसे होने से वो संतुष्ट नहीं थे, खाली भौतिक ज्ञान में निपुण होने से उनको संतोष नहीं मिलता था। He was always extremely renounced, and in fact during his studies at an English university, along with a few of his classmates, he formed a small club. I forget the name of the club, but the principle of the club was that they all made vows to never get married, to be celibate for their whole life. तो वो शुरू से ही वैरागी थे, तो जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने अपने क्लासमेट्स के साथ एक क्लब बना लिया था, तो उसका नाम तो भी मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें क्लब के जितने भी मेंबर्स थे तो उनका एक निश्चय था कि हम विवाह नहीं करेंगे। So he was extremely renounced and detached from material life, although exhibiting his great material qualification. तो वो भौतिक जीवन से पूर्णतः विरक्त थे, हालांकि वो उनका जो मेडिकल योग्यताएं हैं उसको प्रदर्शित कर रहे थे। And as a young man, he had the desire to assist his father in the propagation of the of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. तो उनकी इच्छा थी कि उनके पिता श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो प्रयास करना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करने का, उनमें सहयोग करना। So under the guidance of Srila Bhaktivinoda Thakur, he was recommended to take initiation from Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के निर्देश पे श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज से वो दीक्षा लेना चाहते हैं। And this is when he received the name Shri Varshabhanavi Devi Dayata Das. और फिर दीक्षा के उपरांत उनको श्री वार्षभानवी देवी दयित दास ये नाम दिया जाता है। Which means the servant of one who is very dear to the daughter of King Vrishabhanu, aka Krishna. तो इसका अर्थ है उनके दास जो कि वृषभानु की पुत्री रानी राधा रानी, उनको जो प्रिय है। And after receiving initiation in the Brahma Gaudiya Madhva Sampradaya, he exhibited the pastime of preaching in Bengal. तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा लेने के उपरांत तो बंगाल में प्रचार करने का वो लीला प्रदर्शित करते हैं। His father gave him the instruction to reveal the holy dham of Mayapur, Navadvip Dham. उनके पिता से उनको निर्देश प्राप्त हुआ कि आप नवद्वीप धाम की महिमाएं उसको प्रकाशित करिए। Already there were some Upasampradayas who claimed to have found the Yog Peeth, the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip. But according to the guru of Srila Bhaktivinoda, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, actually the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu was located on the other side of the Ganga in a place called Mayapur. तो भक्तिविनोद ठाकुर के जो गुरु थे श्रीला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, तो उनके निर्देशानुसार जो वास्तविक स्थान था चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वो योगपीठ मायापुर में था। हालांकि उस समय नवद्वीप में और भी कई प्रचलित अपसंप्रदाय थे जो कि ऐसा दावा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य स्थान है वो तो नवद्वीप शहर में है। So Srila Bhaktivinoda Thakur specifically gave this service to Srila Bhaktisiddhanta to promote the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu as being in Mayapur based on Shastra. तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने
विशेष रूप से ये सेवा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रदान की थी कि आप स्थापित करिए कि वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान है वो मायापुर में स्थित है। So for this and for many other reasons, he received much opposition from the caste brahmanas, the smarta brahmanas of Navadvip. तो उसके कारण जो कास्ट गोस्वामी थे तो उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती का। Also, a very controversial thing which he was doing was giving Brahminical initiation to those who were not born in Brahmin families. तो एक और कार्य जो वो कर रहे थे जो कि कास्ट गोस्वामी से बर्दाश्त नहीं होता था कि वो विदेशियों को ब्राह्मण दीक्षा प्रदान कर रहे थे। But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was very expert in defeating all of their arguments on the basis of Shastra, and in this way he was able to establish a center of Krishna consciousness in Mayapur, which was preaching Shuddha Bhakti, which was not being done anywhere else at that time. लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो बहुत ही दक्ष थे, तो शास्त्रों के आधार पर उनके जितने भी तर्क थे उसका वो खंडन कर देते थे और उन्होंने विशेष रूप से मायापुर में एक भक्तों को प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने एक स्थापना कुछ परिस्थापित किया। The philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful. Him giving Krishna consciousness to conditioned souls is the most merciful, and it's very accessible to everyone. चैतन्य महाप्रभु महावदन्य आए हैं तो उन्होंने बहुत ही सरलता से कृष्ण भावनामृत का उपहार हमें प्रदान किया। And because it is very accessible to everyone, unfortunately, after the disappearance of Chaitanya Mahaprabhu, the Krishna consciousness movement was overtaken by apasampradayas, by people who were not actually following properly. चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत ही सरलता से कृष्ण भावनामृत प्रदान किया था, लेकिन उनके अप्रकट हो जाने के बाद ये जो कृष्ण भावनामृत था वो गलत लोगों के पास अप्रसंप्रदायों के हाथ में आ गया। So after several hundreds of years, Srila Bhaktivinoda Thakur was actually that revolutionary person who his goal was to reestablish the original teachings of Chaitanya Mahaprabhu, coming from Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu, and his goal was to teach Shuddha Bhakti, that is Anya Vilashita Shunyam Jnana Karma Dhyanaavritam Anukulyena Krishnanushilanam Bhakti Ruttama. तो फिर कई सैकड़ों वर्षों बाद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जो कि एक क्रांतिकारी प्रचारक थे, तो उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि कैसे जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य शास्त्र प्रदान किए, तो उनके आधार पर शुद्ध भक्ति को स्थापित करने का जिम्मा उन्होंने उठाया। So at that time there were many so-called Rupanugas, there were many so-called followers of Rupa Goswami, but actually none of them were following the pure teachings of Chaitanya Mahaprabhu or Rupa Goswami. तो उस समय रूप गोस्वामी के कई तथाकथित अनुयायी थे, लेकिन वास्तव में वो उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे थे। So for this reason, Srila Bhaktivinoda Thakur published so many different works of writing. He wrote so many different songs. He preached in so many different parts of Bengal in order to correct this. तो इसी कारणवश श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कई सारे लेख लिखे, कई सारे गीत लिखे और बंगाल में ट्रैवल किया प्रचार करने के लिए। And this work was continued by his son Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. और फिर वही कार्य आगे बढ़ाया उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। So this work was done in the form of publishing books, establishing temples, and preaching Shuddha Bhakti to anyone and everyone that he meets. तो ये कार्य उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, पुस्तकें लिखकर, मंदिरों की स्थापना करके और जिस प्रकार से हो सके प्रचार करके। And for this reason, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he adopted so many revolutionary methods of preaching Krishna consciousness. और इसी कारण से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तो कई सारे क्रांतिकारी तरीके अपनाए थे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए।
it is recommended that whenever one is entering into the dham, that they go by foot, or even better than that, that they enter the dham crawling on the ground. तो ऐसा संस्तुत है कि जब आप धाम में प्रवेश करें तो आपको नंगे पांव वहाँ पे जाना चाहिए, और उससे भी अच्छा है कि आप रेंगते हुए वहाँ पे प्रवेश करें. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was known not for entering the dham on foot or even by some bicycle or something like that, but entering the dham in a car, and not just any ordinary car, a Jaguar car, which even today is still, high class. भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज तो उन्होंने धाम में एंट्री ली थी नंगे पाँव नहीं, ना साइकिल पे, वो तो गए थे जगुआर कार में, जो कि आज भी बहुत ही लग्जरी कार मानी जाती है. So in this way he was criticized by so many so-called followers of Rupa Goswami. तो इस वजह से कई सारे जो रूप गोस्वामी के तथाकथित अनुयायी थे, उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की आलोचना भी की. He was also known for wearing stitched Western style coats, clothing like that, and using a table and a chair instead of sitting on the floor. Different things like this he would do, and he would be criticized for these things. तो उन्होंने वो कोट पहनते थे, सिला हुआ कोट पहनते थे, और जमीन पे बैठने के बजाय टेबल चेयर का इस्तेमाल करते थे, तो इसके वजह से उनकी आलोचना भी हुई. Meanwhile, there would be Babajis living in Vrindavan, living in Mayapur, who would accept a loincloth, who would eat very little, who would live under a different tree every night. And in this way, they were thinking themselves to be very strict followers of the teachings of Rupa Goswami. उसकी अपेक्षा कुछ बाबा जी थे वृंदावन में, जो खाली कॉपीन पहनते थे, वो थोड़ा खाते थे, अलग अलग रात अलग अलग पेड़ के नीचे बिताते थे, तो सोचते थे कि हम तो बहुत वैरागी हैं. But just how they would criticize Srila Bhaktisiddhanta, he would criticize them, saying that actually this lifestyle which they have adopted, they've only done so for the sake of solving their chapati problem. तो जैसे ये जो बाबा जी थे तथाकथित रूप गोस्वामी के अनुयायी, तो जैसे वो आलोचना करते थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की, तो वैसे महाराज उनकी आलोचना करते थे कि इन्होंने जो बाबा जी वेश बना रखा है वो किस लिए, अपना पेट पालने के लिए बस. Of course, none of the brahmacharis living here have any idea what a chapati problem is. There's unlimited chapatis every single day. We found that very amazing. तो यहाँ तो कोई ब्रह्मचारी पेट पालने तो आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कमी नहीं है चपातियों की, प्रसाद की. But some people they think themselves to be very intelligent for living a simple life like a Babaji for the sake of filling their belly. वो सोचते थे कि हम तो बहुत होशियार हैं कि हमने बाबा जी का वेश धारण कर लिया है, लेकिन उनका जो असली उद्देश्य था वो तो अपना पेट भरना ही था. So by doing this madhukari style of bhiksha of begging, they would just collect enough, and they would get chapatis. They would get by. They would live happily like that. तो मधुकारी करके उनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, जिससे वो अच्छे से खुशी खुशी जी लेते थे. So Srila Bhaktisiddhanta spoke very heavily against this and called them cheaters and rascals, even though they're living as Babajis in the dham. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बहुत कड़े शब्दों में उनकी आलोचना करते थे, उनको धूर्त और धोखेबाज बोलते थे, हालांकि वो बाबा जी के रूप में थे, बाबा जी के वेश में बाह्य रूप से. And he established very strongly the doctrine of yukta vairagya, or applied renunciation. और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने युक्त वैराग्य ये सिद्धांत स्थापित किया. He showed how actually everything belongs to the Supreme Lord, therefore everything should be engaged in the service of the Supreme Lord. तो उन्होंने दिखाया कि हर वस्तु भगवान को बिलोंग करती है, तो इसलिए हर वस्तु उनकी सेवा में प्रयुक्त होनी चाहिए. So for this reason, he used things like motor cars, like typewriters, like so many other types of technology, which was new and expensive, in order to further his service to the Supreme Personality of Godhead. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने टाइपराइटर, मोटर कार और जो भी उस समय नया नया टेक्नोलॉजी आता था, तो सबका वो प्रयोग करते थे अपनी सेवाओं करने के लिए. This was seen after he left Mayapur in order to establish a mutt in Kolkata. तो जब वो मायापुर छोड़ के कलकत्ता चले जाते हैं वहाँ पे मठ स्थापित करने के लिए, तब इसका
ज्वलंत उदाहरण हम देख पाते हैं युक्त वैराग्य का। His own spiritual master, Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj, actually called Kolkata Kali Brahmanda, the universe of Kali. तो उनके जो गुरु थे श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो वो कलकत्ता को कली ब्रह्मांड कलयुग का शहर बताते थे। And he actually gave him the direct instruction to never go to Kolkata. और उन्होंने उनको निर्देश भी दिया था कि जीवन में कभी कलकत्ता मत जाना। But not seeing Kolkata as being a city of Maya, but seeing it as being an opportunity for expanding the preaching mission of Chaitanya Mahaprabhu, Srila Bhaktisiddhanta established a center for preaching there. तो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ये देखते थे कि कलकत्ता में बहुत अवसर है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने अपना वहाँ पर केंद्र भी स्थापित किया। He established the first printing press of his society there, which he called Bhagavat Yantra, a godly machine. This printing press he called Bhagavat Yantra, a godly machine. भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किसी मठ में स्थापित की और उसको नाम दिया गया भगवत यंत्र। And very soon he started printing daily newspapers called the Nadia Prakash. और वो प्रतिदिन एक पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसका नाम था नदिया प्रकाश। He also continued the printing of his father's magazine, the Sajjana Toshini. और उनके पिता भक्तिनाथ ठाकुर ने जो मैगजीन शुरू की थी सज्जन तोषणी, तो उसका भी प्रकाशन उन्होंने चालू रखा। And he began to publish other bigger works such as the Chaitanya Charitamrita in installations in these different magazines. और बड़े ग्रंथ जैसे चैतन्य चरितामृत, तो उनका भी वो प्रकाशन कार्य थोड़े इंस्टॉलमेंट में करते रहे। Very soon after establishing this printing press, he opened a very famous center at 1 Ultadingi Junction Road, which is now owned by ISKCON actually. तो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने एक उल्टाडिंगी जंक्शन रोड पर कलकत्ता में गौड़ी मठ स्थापित किया जो भी इस्कॉन के पास है। And originally this institution was called the Vishwa Vaishnava Raja Sabha, which was the organization formed by his father Srila Bhaktivinoda. एक्चुअली उस संस्था को विश्व वैष्णव राज सभा कहा जाता था जो उनके पिता श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर ने स्टार्ट किया था। But within a couple of years, the name of the institution was changed to Sri Gaudiya Math. This was the headquarters of his preaching mission in Bengal. और कुछ समय बाद जो उसका संस्था का नाम था वो परिवर्तित करके श्री गौड़ीय मठ रख दिया गया, जो कि उस समय कलकत्ता में गौड़ीय मठ के जो हेडक्वार्टर थे। And it was from this math where many young men were joining as brahmacharis, and even sannyasis were being initiated and being sent all over the country and actually all over the world to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. तो इस मठ में कई नौजवान लड़के ब्रह्मचारी की तरह जुड़ रहे थे और कई सारे सन्यासी सन्यास ग्रहण करने के बाद कई सारे लोग शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए निकल रहे थे। In years to come, many other branches of this institution were opened, like Satchidananda Math, the Sanatana Math, Sri Purushottam Math, like this. All under the name Gaudiya Math. Everyone knew them as the Gaudiya Math. और फिर आने वाले कुछ वर्षों में तो और भी कई शाखाएं खुली जैसे सनातन मठ, सच्चिदानंद मठ, पुरुषोत्तम मठ। And this was actually quite revolutionary. In modern times, in Srila Prabhupada's movement, it's very common to open temples and to have brahmachari ashrams and to have sannyasis like this. But this was never seen before in Gaudiya Vaishnavism. तो अभी हम सामान्य ले लेते हैं कि इस्कॉन के मंदिर हैं, वहाँ पर ब्रह्मचारी आश्रम होगा, लेकिन पहले जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसकी शुरुआत की थी तो उस समय तो कोई ऐसा नहीं सोच सकता था। It was also apparently
diametrically opposed to the teachings of his own Shiksha Guru, Srila Bhaktivinoda Thakur. क्योंकि ये जो सब क्रियाएं थी वो एक बाह्य रूप से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जो शिक्षाएं थी उनके बिल्कुल विपरीत थी। Srila Bhaktivinoda Thakur opened centers called Namahatas, which were just in the homes of devotees, where householder devotees would come together and have sadhu sangha, Bhagavad Katha, Krishna Prasad, everything like that. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने नाम हट की शुरुआत की थी, जिसमें गृहस्थ भक्त इकट्ठे होते थे, हरि कथा करते थे, साधु संग का लाभ लेते थे, प्रसाद होता था। And he actually directly preached that Gaudiya Vaishnavas should not open mutts, because that's what the Shankarites did, that's what Mayavadis did. और वो ऐसा भी कहते थे कि गौड़ीय वैष्णवों को मठ नहीं खोलने चाहिए, ये मठ खोलने का काम तो शंकराचार्य का। Also, it was understood, what was this, forgetting the verse. It's in the Shastra that one should not accept sannyas, one should not perform Ashwamedha Yajna, one should not have sex with his brother's wife. There's one more, I think. Anyways, it's in Shastra not to accept sannyas, but Srila Bhaktisiddhanta was giving sannyas to all these men. तो शास्त्रों में हम देखते हैं कलयुग में 5 चीजें वर्जित हैं, जिसमें एक संन्यास ग्रहण करना भी आता है। So in this way, the activities of Srila Bhaktisiddhanta were highly controversial, especially among the existing society of Gaudiya Vaishnavas. तो इसलिए जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की क्रियाएं थी बहुत ही कैसे कहें कंट्रोवर्शियल थी, विवादास्पद थी। उस समय किसी ने भी ऐसे गौड़ीय वैष्णव इतिहास में किया नहीं था। This was so severe that there were even attempts at taking his life, at killing him. यहाँ तक कि उनको जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। And this is because he was exposing the nonsense that was going on in the name of Gaudiya Vaishnavism, और उसका केवल and establishing the real thing. इसका सिर्फ यही कारण था कि वो जितना भी गौड़ीय वैष्णव के नाम पर जो भी उलपटान हो रहा था उसका विरोध कर रहे थे और सही चीज को वो स्थापित करना चाह रहे थे। At this time, the ever infamous what's his name? This big Mayavadi sannyasi, Bengali. Is his name still famous? Vivekanand. This Vivekanand has a very, very famous quote saying that Vaishnavism is a sex cult, and this was a common belief among the people of Bengal at that time. तो उस समय विवेकानंद का बहुत बोलबाला था और वो गलत प्रचार करते थे कि जो गौड़ीय वैष्णव है वो तो यौन सुख के पीछे भागते हैं। But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was on a mission to prove that the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu were genuine and were actually the highest means for attaining love of God. भक्ति सरस्वती महाराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था ये बताने के लिए कि ये जो कृष्ण भावनामृत गौड़ीय वैष्णव प्रचार है वो वही पद्धति है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने की। And he saw this as being so urgent that it was almost like an emergency. It had to happen right now. So he was willing to adopt anything and everything which he saw reasonable in being in helping to accomplish this purpose. और इसको इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कुछ भी क्रांतिकारी चीज करने को तैयार थे, क्योंकि वो अनुभव कर पा रहे थे कि कृष्ण भावनामृत को फैलाने की एक अर्जेंसी है। Later on in Kolkata, he opened a temple called the Bagh Bazaar Gaudiya Math, still there today. Very, very big, famous marble temple. कुछ समय बाद कलकत्ता में बाग बाजार गौड़ीय मठ को स्थापित किया गया, जो आज भी कलकत्ता में है। It was there that he actually installed a giant printing press directly adjacent to the deity's altar at that temple. और वहीं पर उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी जो बिल्कुल ही अर्चा विग्रह के बाजू में थी। And it wasn't there just for decoration. It was actually an operating printing press, and it's an old school type of printing press, which was very loud and big and kind of ugly. तो जो प्रिंटिंग प्रेस थी अर्चा विग्रह के पास, तो वो डेकोरेशन के लिए नहीं रखी गई थी, तो वहाँ पे पुस्तकें छपती थी और उसकी आवाज निकलती थी, बहुत शोर करती थी। And the sound of that printing press printing books, he actually said that this is the heartbeat of the Gaudiya Math.
और उससे जो प्रिंटिंग मशीन से जो आवाज़ निकलती थी, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि ये गौड़ीय मठ की दिल की धड़कन है। He also called that printing press the Brihad Mridanga, or the big Mridanga. और वो प्रिंटिंग प्रेस को बृहद मृदंग कहकर वो संबोधित करते थे। He gave the example that this Mridanga drum, you can hear it within some circumference, but it only goes so far. The chanting of Harinam, accompanied by this Mridanga drum, you can only hear from so far distance away. But this Brihad Mridanga, it can be sounded all over the material world in the form of distribution of transcendental literature. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती उदाहरण देते थे कि जैसे आप मृदंग बजाते हो तो उसकी आवाज़ तो कुछ दूर तक जाएगी, लेकिन ये जो बृहद मृदंग प्रिंटिंग प्रेस है, तो इससे जो पुस्तकें निकलेंगी वो पूरे वर्ल्ड में बांटी जाएंगी और उसकी आवाज़ हर जगह जाएगी। And he was always encouraging and emphasizing this to his different disciples, to go and distribute this knowledge, and specifically to those who were educated and who were educated in the English language. He had great interest in preaching Krishna consciousness in the English language. भक्तिसिद्धांत सरस्वती बहुत बल देते थे, अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करते थे कि आप जाइए और इन ग्रंथों का वितरण करिए, और खासकर जो एजुकेटेड थे, जो इंग्लिश जानते थे, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी कि वो विदेश में जाकर प्रचार करें। And in this way, he was publishing so many different publications. Even some today are still famous, even among devotees in ISKCON, like the Sri Brahma Samhita, the commentary on the Chaitanya Bhagavat, like this. तो इसी उद्देश्य से भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने कई सारे ग्रंथ भी लिखे थे, और उनमें से कुछ अभी भी इस्कॉन के भक्तों के बीच पॉपुलर है, जैसे ब्रह्म संहिता, फिर उनकी जो कमेंट्री है चैतन्य भागवत पर। And he was even printing an English magazine. The Harmonist was English, right? The Harmonist, a fortnightly magazine. He was even printing in English. And at that time in India, even today, lots of people know English, but not so many people know English. Back then, only the educated people knew English, and he was still printing a magazine in the English language. तो उस समय वो एक मैगजीन हार्मोनिस्ट, जो कि हर 15 दिन में प्रकाशित होती थी, तो इंग्लिश भाषा में वो उसको प्रिंट करवाते थे। And every opportunity that he had, every time some young man would come to the society and was educated in the English language, he would push them to go and preach in the Western world. उस समय कोई भी गौड़ी मठ में विशेषकर कोई पढ़ा लिखा नौजवान जो इंग्लिश जानता है वो आता, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती उनको प्रेरित करते कि आप जाओ और विदेश में प्रचार करो। This is actually the first instruction that he gave our own Srila Prabhupada, actually when they met in, I think 1922 at this Gaudiya Math Center at Ultadingi Road. तो 1922 में जब पहली बार हमारे प्रभुपाद जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती से मिले थे, तब उनको यही निर्देश भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने दिया था कि आप जाओ और विदेश में प्रचार करो। And later on, several of his disciples were sent to different parts of Europe. Even one came to America, and they weren't really able to get any traction in preaching Krishna consciousness in the West. और उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को भेजा भी यूरोप में, एक उनके शिष्य अमेरिका भी आए, लेकिन वो कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऐसा कर नहीं पाए। But our own Srila Prabhupada, understanding the heart of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, was able to bring this message of Chaitanya Mahaprabhu to the Western world, specifically in the form of the distribution of transcendental literature. तो हमारे प्रभुपाद श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की हृदय की इच्छा जानते हुए उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश था उसका प्रचार प्रसार किया विदेश में, विशेषकर ग्रंथों के रूप में। There's a very famous conversation which is recorded between our Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta at Radha Kund, the most intimate and esoteric holy place in all of the universes, where Srila Bhaktisiddhanta told A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada that if he ever gets any money to print books, तो एक प्रसिद्ध वार्तालाप है हमारे प्रभुपाद और श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के बीच,
जब वो राधा कुंड में उनकी भेंट हुई थी तो उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद को निर्देश दिया था कि जब भी तुम्हें पैसा मिले तुम ग्रंथ छपवाना। And this actually set the mood of Srila Prabhupada's preaching in the West. The whole movement was established based on these books. तो ये जो निर्देश था तो इसी ने पूरा शेप दे दी प्रभुपाद का जो प्रचार आंदोलन था उसका पूरा गठन किया इस निर्देश ने कि कैसे जो पुस्तकें थी वो आधार बनी कृष्ण भावनामृत का जो प्रभुपाद ने प्रचार किया। So in this way, we are very indebted to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada for teaching this to our own spiritual master. तो इसलिए हम आभारी हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के जिन्होंने ऐसा निर्देश दिया हमारे प्रभुपाद को। Srila Prabhupada has famously said that his father, Gaur Mohan De, actually taught him all of the different principles of Krishna consciousness. He says that he was actually a pure devotee. प्रभुपाद बताते थे कि उनके पिता गौर मोहन डे वो शुद्ध भक्त थे और उन्होंने उनको कृष्ण भावनामृत की अलग अलग विषय में उनको सिखाया। But he says that the unique thing that he learned from his spiritual master Srila Bhaktisiddhanta was the publication, and production, and distribution of these books. लेकिन जो यूनिक चीज प्रभुपाद बताते हैं उन्होंने अपने गुरु से सीखी वो था ये ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण। So this is the unique contribution that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has given to the society of devotees, and it has created a lasting effect in the preaching of Krishna consciousness in this world today. तो ये जो ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण है तो ये श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की विशेष योगदान है जिसके यूनिक ग्रंथों के आधार पर ये आगे आगे प्रचार कार्य बढ़ रहा है। Still, there are so many different works which he has composed. Like I said, he was publishing a daily magazine, the Nadia Prakash, where so many of his writings were published, and there are still so many of them which have not been translated into other languages other than Bengali. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने कई सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे, जैसे मैं बता रहा था नदिया प्रकाश जो कि प्रतिदिन गौड़ी मत से प्रकाशित होती थी। उसके अतिरिक्त उनके और भी कई सारी रचनाएं हैं जो कि बंगला भाषा में रह गए, जिनका और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं। Now there is an organized effort in Kolkata. We just recently visited Bhaktivedanta Research Center or something like this, BRC. They have a vast library of all of Srila Bhaktisiddhanta's writings. And there's an organized effort to translate these into English and distribute them for the devotees. अभी प्रयास चल रहा है, तो कलकत्ता में भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर है बीआरसी, जहाँ पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की जो रचनाएं हैं उनको दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करने का प्रयास जारी है। So there's so much opportunity for devotees to serve Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in translating these works and distributing these works, and specifically in serving his dear disciple A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We can do tremendous service in pleasing the Supreme Lord. हम देख सकते हैं सेवा के कितने सारे अवसर हैं। तो जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो पूर्ववर्ती आचार्य था उनकी लेखों का ट्रांसलेशन किया, कमेंट्री किया, और फिर आगे प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन दिया हमें, तो इसमें भी सेवाएं के अनेक अवसर हैं। So like I said, this is a very basic overview of some of the life and teachings of Srila Bhaktisiddhanta, and there's so much more that is further elaborated in this book, Sri Bhaktisiddhanta Vaibhava. तो ये तो बहुत बेसिक सा भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन का रूपरेखा है। तो इसके अलावा भक्ति सिद्धांत वैभव पुस्तक में अनेक और चीज़ें आपको मिल सकती हैं। There you will find very intensive studies on the philosophical and the cultural contributions which Srila Bhaktisiddhanta has done for the society of devotees. तो वहाँ पर आपको
उस ग्रंथ में भक्ति सिद्धांत वैभव ग्रंथ में जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का जितना भी उनका सैद्धांतिक और कल्चरल जो भी उनका योगदान है तो उसके विषय में बहुत आपको जानकारी मिल सकती है. So in preparation for observing this festival tomorrow, the appearance day of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, everyone should read different sections from this book, and if they don't have access to this book, they should purchase this book as well. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का कल आविर्भाव महोत्सव है, तो अच्छे भक्तों को चाहिए कि ये जो ग्रंथ है तो इसमें से पाठ करें, अलग अलग सेक्शन पढ़ें, और अगर किन्हीं के पास ग्रंथ नहीं है तो अच्छा है इस समय ये ग्रंथ खरीदे. So thank you very much for letting me say a few little things. I apologize if there's inevitably there's so many things that I've said which you've already heard. Even this week you're having katha every single day. You've probably heard so many of these things, but it's important to hear these things over and over again. It's purifying. तो मैं धन्यवाद करता हूँ पहले तो कि मुझे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय में कुछ कहने का अवसर मिला. तो हो सकता है मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि इसमें से कई चीज़ें थी जो आपने पहले भी सुनी होंगी, आप जब जानते होंगे तो अच्छा है, लेकिन बार बार उन्हीं चीज़ों को दोबारा सुनना, उनको दोबारा जानना. You might be wondering, why are we giving so much importance to Srila Bhaktisiddhanta? Why are we giving so much importance to A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada? But actually the spiritual master is Sakshad Hari. And Krishna himself in the Srimad Bhagavatam says that I am non-different to the Acharya. तो कोई ऐसा कह सकता है कि हम क्यों इतना ज़्यादा गुणगान करें भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का या श्रीला प्रभुपाद का, लेकिन भगवान कृष्ण खुद बताते हैं कि आचार्य को उनका ही स्वरूप समझे, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र. So like this, hearing about the acharyas is non-different from hearing about Krishna. Serving the acharyas, glorifying the acharyas, non-different. तो आचार्यों के विषय में सुनना, उनकी सेवा करना, तो भगवान कृष्ण के विषय में सुनने से या उनकी सेवा करने से अलग नहीं है. So thank you very much. If there are any questions or comments in this regard on the subject of Srila Bhaktisiddhanta, then we'd be happy to try to answer something. किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय में? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Prabhuji, we see that Prabhupada wrote Bhagavad Gita, commentary on Bhagavad Gita, Bhagavatam, and the whole literature he translated. So at that time of Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he must have also written commentary on Bhagavad Gita. And his disciples and Gaudiya Math people used to study that. So what is the difference and that Prabhupada wrote and at that time that they used to read? And is that still available? And what was the necessity that Prabhupada wrote a different commentary? Or I don't know actually about it. Yes. Yeah, so Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had many different publications, some of them being commentaries on books like Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. I think Bhagavad Gita he didn't have. He would use the commentary written by Srila Bhaktivinoda Thakur, right? So in this way, the commentaries were there. He was publishing them. His disciples were reading them, studying them. Inevitably, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada also studied these commentaries. And we should understand that actually the commentaries on the Shastra by Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and His Divine Grace Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada are non-different. It's coming in pure disciplic succession. The main difference being that in the case of Bhaktisiddhanta Saraswati, they were presented in the Bengali language. In the case of Srila Prabhupada, they were presented in the English language. And even in the English commentaries of specifically of Chaitanya Charitamrita, you will see Srila Prabhupada directly writing that this is coming from the commentary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Sometimes it's almost like a copy and paste. He'll put like that. So Srila Prabhupada, he referred to many different commentaries. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's commentaries, his own spiritual master, so many previous acharyas, Jiva Goswami. He referred to many commentaries on Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. But we should understand that these are non-different. It's the same message being presented in a slightly different way. So Prabhupada translating that Bhagavad Gita,
So that was the translation of his own spiritual master, or he just translated according to time and circumstances So where he was preaching. Srila Prabhupada's translation of Bhagavad Gita was directly from the Sanskrit shlokas of the Bhagavad Gita itself. And this, he used different Sanskrit dictionaries and like that. He was proficient in Sanskrit. His commentary was also based on the commentaries of Srila Baladev Vidyabhushan, Vishwanath Chakravarti Thakur, and of course the teachings of his own spiritual master. So, like that. Also, there's something in the Gitargan, Prabhupada's Bengali rendition of the Bhagavad Gita, poetic form of Bhagavad Gita in the Bengali language. Any other questions? No? Okay. Mataji's, anything? No. Okay, thank you very much. All glories to His Divine Grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada ki jai.